हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बैटमैन फॉरएवर हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। बैटमैन फॉरएवर इज ए 1995 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द डीसी कॉमिक्स कैरेक्टर बैटमैन बाय बॉब केन एंड बिल फिंगर। इट इज़ द थर्ड इंस्टॉलमेंट ऑफ बैटमैन फिल्म सीरीज एक्टिंग एज ए standalone sequel to Batman Returns, directed by Joel Schumacher and produced by Tim Burton and Peter McGregor. Scott. It starred Val Kilmer and Bruce Wayne as Batman, replacing Michael Keaton alongside Tommy L. Jones, Jim Carrey, Nicole Kidman, and Chris O'Donnell. The film follows Batman as he attempts to prevent Two-Face's and the Riddler from uncovering his script and identity and extracting information from the minds of Gotham City residents, while at the same time navigated his feelings for psychologist Dr. Chase Madrian and adopting orphaned acrobat Dick Grayson, who become his partner and best friend Robin। इस मूवी का अन्य पॉइंट देखते हैं। जिस मूवी डायरेक्टर जोल शुमाकर, स्क्रीन प्ले बाय ली बैचलर, जेनेट स्कॉट बैचलर, अकाइव गोल्ड्समैन, स्टोरी बाय ली बैचलर, जेनेट स्कॉट बैचलर, बेस्ड ऑन कैरेक्टर अपीयरिंग इन मैगजीन published by DC Comics। Batman character by Bob Kane, produced by Tim Burton, Peter McGregor, Scott. Cinematography Stephen Goldblatt, edited by Dennis Virkler, music by Reed Goldthal, distributed by Warner Bros. Release date June 9, 1995, Man Village Theatre, June 16, 1995, United States, running time 122 minutes, country United States, language English, budget $100 million, box office $336.6 million। दोस्तों, हम इस मूवी के रिव्यू को आज ही समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बैटमैन फॉरएवर हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। बैटमैन फॉरएवर इज ए 1995 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द डीसी कॉमिक्स कैरेक्टर बैटमैन बाय बॉब केन एंड बिल फिंगर। It is the third installment of Batman film series, acting as a standalone sequel to Batman Returns, directed by Joel Schumacher and produced by Tim Burton and Peter McGregor. Scott. It starred Val Kilmer and Bruce Wayne as Batman, replacing Michael Keaton alongside Tommy L. Jones, Jim Carrey, Nicole Kidman, and Chris O'Donnell. The film follows Batman as he attempts to prevent Two-Face's and the Riddler from uncovering his script and identity and extracting information from the minds of Gotham City residents, while at the same time navigated his feelings
for psychologist Dr. Chase Madrin, and adopting orphaned acrobat Dick Grayson, who became his partner and best friend Robin। आइए इस मूवी का अन्य पॉइंट देखते हैं। इस मूवी डायरेक्टर जोल शुमाकर, स्क्रीन प्ले बाय ली बैचलर, जेनेट स्कॉट बैचलर, अकाइव गोल्ड्समैन, स्टोरी बाय ली बैचलर, जेनेट स्कॉट बैचलर, based on character appearing in magazine published by DC Comics। Batman character by Bob Kane, produced by Tim Burton, Peter McGregor, Scott, cinematography Stephen Goldblatt, edited by Dennis Virkler, music by Elid Goldthal, distributed by Warner Bros. Release date June 9, 1995, Man Village Theatre, June 16, 1995, United States, running time 122 minutes, country United States, language English, budget $100 million, box office $336.6 million। दोस्तों हम इस मूवी के रिव्यू को आज ही समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बैटमैन फॉरएवर हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। बैटमैन फॉरएवर इज 1995 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द DC कॉमिक्स कैरेक्टर बैटमैन बाय बॉब केन एंड बिल फिंगर। इट इज़ द थर्ड इंस्टॉलमेंट ऑफ बैटमैन फिल्म सीरीज, एक्टिंग एज ए standalone sequel to Batman Returns, directed by Joel Schumacher and produced by Tim Burton and Peter McGregor, Scott। It starred Val Kilmer and Bruce Wayne, Batman replacing Michael Keaton alongside Tommy Lee Jones, Jim Carrey, Nicole Kidman and Chris O'Donnell। The film follows Batman as he attempts to prevent Two-Face's and the Riddler from uncovering his secret and identity and extracting information from the minds of Gotham City residents, while at the same time navigating his feelings for psychologist Dr. Chase Madrin, and adopting orphaned acrobat Dick Grayson, who became his partner and best friend Robin। आइए इस मूवी का अन्य पॉइंट देखते हैं। इस मूवी डायरेक्टर जोल शुमाकर, स्क्रीन प्ले बाय ली बैचलर, जेनेट स्कॉट बैचलर, अकाइव गोल्ड्समैन, स्टोरी बाय ली बैचलर, जेनेट स्कॉट बैचलर, based on character appearing in magazine published by DC Comics। Batman character by Bob Kane, produced by Tim Burton, Peter McGregor, Scott, cinematography Stephen Goldblatt, edited by Dennis Virkler, music by Elid Goldthal, distributed by Warner Bros. Release date June 9, 1995, Man Village Theatre, June 16, 1995, United States, running time 122 minutes, country United States, language English, budget $100 million, box office $336.6 million। दोस्तों हम इस मूवी के रिव्यू को आज ही समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बैटमैन फॉरएवर हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। बैटमैन फॉरएवर इज 1995 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द DC कॉमिक्स कैरेक्टर बैटमैन बाय बॉब केन एंड बिल फिंगर। It is the third installment of Batman film series, acting as a standalone sequel to Batman Returns, directed by Joel Schumacher and produced by Tim Burton and Peter McGregor, Scott। It starred Val Kilmer and Bruce Wayne, Batman replacing Michael Keaton alongside Tommy Lee Jones, Jim Carrey, Nicole Kidman and Chris O'Donnell। The film follows Batman as he attempts to prevent Two-Face's and the Riddler from uncovering his secret and identity and extracting information from the minds of Gotham City residents, while at the same time navigating his feelings for psychologist Dr. Chase Madrin, and adopting orphaned
acrobat Dick Grayson, who became his partner and best friend Robin। आइए इस मूवी का अन्य पॉइंट देखते हैं। इस मूवी डायरेक्टर जोल शुमाकर, स्क्रीन प्ले बाय ली बैचलर, जेनेट स्कॉट बैचलर, अकाइव गोल्ड्समैन, स्टोरी बाय ली बैचलर, जेनेट स्कॉट बैचलर, based on character appearing in magazine published by DC Comics। Batman character by Bob Kane, produced by Tim Burton, Peter McGregor, Scott, cinematography Stephen Goldblatt, edited by Dennis Virkler, music by Reed Goldthal, distributed by Warner Bros. Release date June 9, 1995, Man Village Theatre, June 16, 1995, United States, running time 122 minutes, country United States, language English, budget $100 million, box office $336.6 million। दोस्तों हम इस मूवी की रिव्यू को आज ही समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बैटमैन फॉरएवर हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। बैटमैन फॉरएवर इज 1995 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द DC कॉमिक्स कैरेक्टर बैटमैन बाय बॉब केन एंड बिल फिंगर। इट इज़ द थर्ड इंस्टॉलमेंट ऑफ बैटमैन फिल्म सीरीज, एक्टिंग एज ए standalone sequel to Batman Returns, directed by Joel Schumacher and produced by Tim Burton and Peter McGregor. Scott. It starred Val Kilmer and Bruce Wayne, Batman replacing Michael Keaton alongside Tommy Lee Jones, Jim Carrey, Nicole Kidman and Chris O'Donnell. The film follows Batman as he attempts to prevent Two-Face's and the Riddler from uncovering his secret and identity and extracting information from the minds of Gotham City residents, while at the same time navigating his feelings for psychologist Dr. Chase Madrian and adopting orphaned acrobat Dick Grayson, who became his partner and best friend Robin। आइए इस मूवी का अन्य पॉइंट देखते हैं। इस मूवी डायरेक्टर जोल शुमाकर, स्क्रीन प्ले बाय ली बैचलर, जेनेट स्कॉट बैचलर, अकाइव गोल्ड्समैन, स्टोरी बाय ली बैचलर, जेनेट स्कॉट बैचलर, बेस्ड ऑन कैरेक्टर अपीयरिंग इन magazine published by DC Comics। Batman character by Bob Kane, produced by Tim Burton, Peter McGregor, Scott, cinematography Stephen Goldblatt, edited by Dennis Virkler, music by Reed Goldthal, distributed by Warner Bros. Release date June 9, 1995, Man Village Theatre, June 16, 1995, United States, running time 122 minutes, country United States, language English, budget $100 million, box office $336.6 million। दोस्तों हम इस मूवी की रिव्यू को आज ही समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बैटमैन फॉरएवर हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। बैटमैन फॉरएवर इज 1995 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द DC कॉमिक्स कैरेक्टर बैटमैन बाय बॉब केन एंड बिल फिंगर। It is the third installment of Batman film series, acting as a standalone sequel to Batman Returns, directed by Joel Schumacher and produced by Tim Burton and Peter McGregor. Scott. It starred Val Kilmer and Bruce Wayne, Batman replacing Michael Keaton alongside Tommy Lee Jones, Jim Carrey, Nicole Kidman and Chris O'Donnell. The film follows Batman as he attempts to prevent Two-Face's and the Riddler from uncovering his secret and identity and extracting information from the minds of Gotham City residents, while at the same time navigating his feelings for psychologist Dr. Chase Madrian and adopting orphaned acrobat Dick Grayson, who became his partner and best friend Robin।
आइए मूवी का अन्य पॉइंट देखते हैं। जिस मूवी डायरेक्टर जोल शुमाकर, स्क्रीन प्ले बाय ली बैचलर, जेनेट स्कॉट बैचलर, अकाई गोल्ड्समैन, स्टोरी बाय ली बैचलर, जेनेट स्कॉट बैचलर, based on character appearing in Magazine, published by DC Comics. Batman character by Bob Kane, produced by Tim Burton, Peter McGregor, Scott. Cinematography Stephen Goldblatt, edited by Dennis Virkler, music by Reed Goldthal, distributed by Warner Bros. Release date June 9, 1995. Man Village Theatre, June 16, 1995. United States. Running time 122 minutes. Country United States. Language English. Budget $100 million. Box office $336.6 million। दोस्तों हम इस मूवी के रिव्यू का यही जवाब करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बैटमैन फॉरएवर हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। बैटमैन फॉरएवर इज 1995 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द डीसी कॉमिक्स कैरेक्टर बैटमैन बाय बॉब केन एंड बिल फिंगर। इट इज़ द थर्ड इंस्टॉलमेंट ऑफ बैटमैन फिल्म सीरीज, एक्टिंग एज ए standalone sequel to Batman Returns, directed by Joel Schumacher and produced by Tim Burton and Peter McGregor. Scott. It starred Val Kilmer and Bruce Wayne, Batman, replacing Michael Keaton alongside Tommy Lee Jones, Jim Carrey, Nicole Kidman, and Chris O'Donnell. The film follows Batman as he attempts to prevent Two-Face's and the Riddler from uncovering his script and identity and extracting information from the minds of Gotham City residents, while at the same time navigated his feelings for psychologist Dr. Chase Madrian and adopting orphaned acrobat Dick Grayson, who become his partner and best friend Robin। आइए मूवी का अन्य पॉइंट देखते हैं। जिस मूवी डायरेक्टर जोल शुमाकर, स्क्रीन प्ले बाय ली बैचलर, जेनेट स्कॉट बैचलर, अकाई गोल्ड्समैन, स्टोरी बाय ली बैचलर, जेनेट स्कॉट बैचलर, based on character appearing in Magazine, published by DC Comics. Batman character by Bob Kane, produced by Tim Burton, Peter McGregor, Scott. Cinematography Stephen Goldblatt, edited by Dennis Virkler, music by Reed Goldthal, distributed by Warner Bros. Release date June 9, 1995. Man Village Theatre, June 16, 1995. United States. Running time 122 minutes. Country United States. Language English. Budget $100 million. Box office $336.6 million। दोस्तों हम इस मूवी के रिव्यू का यही जवाब करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बैटमैन फॉरएवर हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। बैटमैन फॉरएवर इज 1995 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द डीसी कॉमिक्स कैरेक्टर बैटमैन बाय बॉब केन एंड बिल Finger. It is the third installment of Batman film series, acting as a standalone sequel to Batman Returns, directed by Joel Schumacher and produced by Tim Burton and Peter McGregor. Scott. It starred Val Kilmer and Bruce Wayne, Batman, replacing Michael Keaton alongside Tommy Lee Jones, Jim Carrey, Nicole Kidman, and Chris O'Donnell. The film follows Batman as he attempts to prevent Two-Face's and the Riddler from uncovering his script and identity and extracting information from the minds of Gotham City residents, while at the same time navigated his feelings for psychologist Dr. Chase Madrian and adopting orphaned acrobat Dick Grayson, who become his partner and best friend Robin। आइए मूवी का अन्य पॉइंट देखते हैं। जिस मूवी डायरेक्टर जोल शुमाकर, स्क्रीन प्ले बाय ली बैचलर, जेनेट स्कॉट बैचलर, अकाई
Goldsman story by Lee Batchelor, Janet Scott Batchelor, based on character appearing in Magazine, published by DC Comics. Batman character by Bob Kane, produced by Tim Burton, Peter McGregor Scott, cinematography Stephen Goldblatt, edited by Dennis Virkler, music by Reed Goldthal, distributed by Warner Bros. Release date June 9, 1995, Man Village Theatre, June 16, 1995, United States, running time 122 minutes, country United States, language English, budget $100 million, box office $336.6 million। दोस्तों हम इस मूवी के रिव्यू को आज यही समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बैटमैन फॉरएवर हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। बैटमैन फॉरएवर इज 1995 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द डीसी कॉमिक्स कैरेक्टर बैटमैन बाय बॉब केन एंड बिल फिंगर। इट इज़ द थर्ड इंस्टॉलमेंट ऑफ बैटमैन फिल्म सीरीज, एक्टिंग एज ए standalone sequel to Batman Returns, directed by Joel Schumacher and produced by Tim Burton and Peter McGregor Scott. It starred Val Kilmer and Bruce Wayne, Batman replacing Michael Keaton alongside Tommy Lee Jones, Jim Carrey, Nicole Kidman and Chris O'Donnell. The film follows Batman as he attempts to prevent Two-Face's and the Riddler from uncovering his script and identity and extracting information from the minds of Gotham City residents, while at the same time navigated his feelings for psychologist Dr. Chase Madrian and adopting orphaned acrobat Dick Grayson, who become his partner and best friend Robin। इस मूवी का अन्य पॉइंट देखते हैं जिसमें डायरेक्टर जोल शुमाकर, स्क्रीन प्ले बाय ली बैचलर, जेनेट स्कॉट बैचलर, अकाई गोल्ड्समैन स्टोरी बाय ली बैचलर, जेनेट स्कॉट बैचलर, बेस्ड ऑन कैरेक्टर अपीयरिंग इन मैगजीन, published by DC Comics. Batman character by Bob Kane, produced by Tim Burton, Peter McGregor Scott, cinematography Stephen Goldblatt, edited by Dennis Virkler, music by Reed Goldthal, distributed by Warner Bros. Release date June 9, 1995, Man Village Theatre, June 16, 1995, United States, running time 122 minutes, country United States, language English, budget $100 million, box office $336.6 million। दोस्तों हम इस मूवी के रिव्यू को आज यही समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बैटमैन फॉरएवर हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। बैटमैन फॉरएवर इज 1995 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द डीसी कॉमिक्स कैरेक्टर बैटमैन बाय बॉब केन एंड बिल फिंगर। इट इज़ द थर्ड इंस्टॉलमेंट ऑफ बैटमैन फिल्म सीरीज, एक्टिंग एज ए standalone sequel to Batman Returns, directed by Joel Schumacher and produced by Tim Burton and Peter McGregor Scott. It starred Val Kilmer and Bruce Wayne, Batman replacing Michael Keaton alongside Tommy Lee Jones, Jim Carrey, Nicole Kidman and Chris O'Donnell. The film follows Batman as he attempts to prevent Two-Face's and the Riddler from uncovering his script and identity and extracting information from the minds of Gotham City residents, while at the same time navigated his feelings for psychologist Dr. Chase Madrian and adopting orphaned acrobat Dick Grayson, who become his partner and best friend Robin। इस मूवी का अन्य पॉइंट देखते हैं जिसमें डायरेक्टर जोल शुमाकर, स्क्रीन प्ले बाय ली बैचलर, जेनेट स्कॉट बैचलर, अकाई गोल्ड्समैन स्टोरी बाय ली बैचलर, जेनेट स्कॉट बैचलर, based on character appearing in
magazine published by DC Comics. Batman character by Bob Kane, produced by Tim Burton, Peter McGregor Scott. Cinematography Stephen Goldblatt, edited by Dennis Virkler, music by Reed Goldthal, distributed by Warner Bros. Release date June 9, 1995, Man Village Theatre, June 16, 1995, United States, running time 122 minutes, country United States, language English, budget $100 million, box office $336.6 million। दोस्तों हम इस मूवी की रिव्यू को आज यही समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बैटमैन फॉरएवर हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। बैटमैन फॉरएवर इज 1995 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द DC कॉमिक्स कैरेक्टर बैटमैन बाय बॉब केन एंड बिल Finger. It is the third installment of Batman film series, acting as a standalone sequel to Batman Returns, directed by Joel Schumacher and produced by Tim Burton and Peter McGregor Scott. It starred Val Kilmer and Bruce Wayne, Batman replacing Michael Keaton alongside Tommy Lee Jones, Jim Carrey, Nicole Kidman and Chris O'Donnell. The film follows Batman as he attempts to prevent Two-Face and the Riddler from uncovering his secret and identity and extracting information from the minds of Gotham City residents, while at the same time navigating his feelings for psychologist Dr. Chase Madrian and adopting orphaned acrobat Dick Grayson, who become his partner and best friend Robin। आइए इस मूवी का अन्य पॉइंट देखते हैं। जिसमें डायरेक्टर जोल शुमाकर, स्क्रीन प्ले बाय ली बैचलर, जेनेट स्कॉट बैचलर, अकाइव गोल्ड्समैन, स्टोरी बाय ली बैचलर, जेनेट स्कॉट बैचलर, based on character appearing in magazine published by DC Comics. Batman character by Bob Kane, produced by Tim Burton, Peter McGregor Scott. Cinematography Stephen Goldblatt, edited by Dennis Virkler, music by Reed Goldthal, distributed by Warner Bros. Release date June 9, 1995, Man Village Theatre, June 16, 1995, United States, running time 122 minutes, country United States, language English, budget $100 million, box office $336.6 million। दोस्तों हम इस मूवी की रिव्यू को आज यही समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बैटमैन फॉरएवर हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। बैटमैन फॉरएवर इज 1995 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द DC कॉमिक्स कैरेक्टर बैटमैन बाय बॉब केन एंड बिल फिंगर। इट इज़ द थर्ड installment of Batman film series, acting as a standalone sequel to Batman Returns, directed by Joel Schumacher and produced by Tim Burton and Peter McGregor Scott. It starred Val Kilmer and Bruce Wayne, Batman replacing Michael Keaton alongside Tommy Lee Jones, Jim Carrey, Nicole Kidman and Chris O'Donnell. The film follows Batman as he attempts to prevent Two-Face and the Riddler from uncovering his secret and identity and extracting information from the minds of Gotham City resident, while at the same time navigating his feelings for psychologist Dr. Chase Madrian and adopting orphaned acrobat Dick Grayson, who become his partner and best friend Robin। आइए इस मूवी का अन्य पॉइंट देखते हैं। जिसमें डायरेक्टर जोल शुमाकर, स्क्रीन प्ले बाय ली बैचलर, जेनेट स्कॉट बैचलर, अकाइव गोल्ड्समैन, स्टोरी बाय ली बैचलर, जेनेट स्कॉट बैचलर, based on character appearing in magazine published by DC Comics. Batman character by Bob Kane, produced by Tim Burton, Peter McGregor Scott.
Cinematography Stephen Goldblatt, edited by Dennis Virkler, music by Reed Goldthal, distributed by Warner Bros. Release date June 9, 1995, Man Village Theatre, June 16, 1995, United States, running time 122 minutes, country United States, language English, budget $100 million, box office $336.6 million। दोस्तों अब इस मूवी की रिव्यू का हिसाब करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बैटमैन फॉरएवर हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। बैटमैन फॉरएवर इज 1995 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द डीसी कॉमिक्स कैरेक्टर बैटमैन बाय बॉब केन एंड बिल Finger. It is the third installment of Batman film series, acting as a standalone sequel to Batman Returns, directed by Joel Schumacher and produced by Tim Burton and Peter McGregor. Scott. It starred Val Kilmer and Bruce Wayne, Batman replacing Michael Keaton alongside Tommy Lee Jones, Jim Carrey, Nicole Kidman and Chris O'Donnell. The film follows Batman as he attempts to prevent Two-Face and the Riddler from uncovering his secret and identity and extracting information from the minds of Gotham City residents, while at the same time navigating his feelings for psychologist Dr. Chase Madrian and adopting orphaned acrobat Dick Grayson, who become his partner and best friend Robin। आइए इस मूवी का अन्य पॉइंट देखते हैं। जिसमें डायरेक्टर जॉल शुमाकर, स्क्रीन प्ले बाय ली बैचलर, जेनेट स्कॉट बैचलर, अकाइव गोल्ड्समैन, स्टोरी बाय ली बैचलर, जेनेट स्कॉट बैचलर, based on character appearing in magazine published by DC Comics, Batman character by Bob Kane, produced by Tim Burton, Peter McGregor. Scott. Cinematography Stephen Goldblatt, edited by Dennis Virkler, music by Reed Goldthal, distributed by Warner Bros. Release date June 9, 1995, Man Village Theatre, June 16, 1995, United States, running time 122 minutes, country United States, language English, budget $100 million, box office $336.6 million। दोस्तों अब इस मूवी की रिव्यू का हिसाब करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बैटमैन फॉरएवर हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। बैटमैन फॉरएवर इज 1995 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द डीसी कॉमिक्स कैरेक्टर बैटमैन बाय बॉब केन एंड बिल फिंगर। इट इज द थर्ड installment of Batman film series, acting as a standalone sequel to Batman Returns, directed by Joel Schumacher and produced by Tim Burton and Peter McGregor. Scott. It starred Val Kilmer and Bruce Wayne, Batman replacing Michael Keaton alongside Tommy Lee Jones, Jim Carrey, Nicole Kidman and Chris O'Donnell. The film follows Batman as he attempts to prevent Two-Face and the Riddler from uncovering his secret and identity and extracting information from the minds of Gotham City resident, while at the same time navigating his feelings for psychologist Dr. Chase Madrian and adopting orphaned acrobat Dick Grayson, who become his partner and best friend Robin। आइए इस मूवी का अन्य पॉइंट देखते हैं। जिसमें डायरेक्टर जॉल शुमाकर, स्क्रीन प्ले बाय ली बैचलर, जेनेट स्कॉट बैचलर, अकाइव गोल्ड्समैन, स्टोरी बाय ली बैचलर, जेनेट स्कॉट बैचलर, based on character appearing in magazine published by DC Comics, Batman character by Bob Kane, produced by Tim Burton, Peter McGregor. Scott. Cinematography Stephen Goldblatt, edited by Dennis Virkler, music by Reed Goldthal,
Distributed Warner Bros. Date June 9, 1995. Man Village Theatre June 16, 1995. United States. Running time 122 minutes. Country United States. Language English. Budget $100 million. Box office $336.6 million। दोस्तों अब इस मूवी के रिव्यू का हिसाब करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बैटमैन फॉरएवर हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। बैटमैन फॉरएवर इज 1995 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द डीसी कॉमिक्स कैरेक्टर बैटमैन बाय बॉब केन एंड बिल Finger. It is the third installment of Batman film series, acting as a standalone sequel to Batman Returns, directed by Joel Schumacher and produced by Tim Burton and Peter McGregor. Scott. It starred Val Kilmer and Bruce Wayne, Batman replacing Michael Keaton alongside Tommy Lee Jones, Jim Carrey, Nicole Kidman and Chris O'Donnell. The film follows Batman as he attempts to prevent Two-Face and the Riddler from uncovering his secret and identity and extracting information from the minds of Gotham City residents, while at the same time navigating his feelings for psychologist Dr. Chase Madrian and adopting orphaned acrobat Dick Grayson, who become his partner and best friend Robin। आइए इस मूवी का अन्य पॉइंट देखते हैं। जिसमें डायरेक्टर जॉल शुमाकर, स्क्रीन प्ले बाय ली बैचलर, जेनेट स्कॉट बैचलर, अकाइव गोल्ड्समैन, स्टोरी बाय ली बैचलर, जेनेट स्कॉट बैचलर, based on character appearing in magazine published by DC Comics. Batman character by Bob Kane, produced by Tim Burton, Peter McGregor. Scott. Cinematography Stephen Goldblatt, edited by Dennis Virkler, music by Reed Goldthal. Distributed Warner Bros. Date June 9, 1995. Man Village Theatre June 16, 1995. United States. Running time 122 minutes. Country United States. Language English. Budget $100 million. Box office $336.6 million। दोस्तों अब इस मूवी के रिव्यू का हिसाब करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बैटमैन फॉरएवर हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। बैटमैन फॉरएवर इज 1995 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द डीसी कॉमिक्स कैरेक्टर बैटमैन बाय बॉब केन एंड बिल Finger. It is the third installment of Batman film series, acting as a standalone sequel to Batman Returns, directed by Joel Schumacher and produced by Tim Burton and Peter McGregor. Scott. It starred Val Kilmer and Bruce Wayne, Batman replacing Michael Keaton alongside Tommy Lee Jones, Jim Carrey, Nicole Kidman and Chris O'Donnell. The film follows Batman as he attempts to prevent Two-Face and the Riddler from uncovering his secret and identity and extracting information from the minds of Gotham City residents, while at the same time navigating his feelings for psychologist Dr. Chase Madrian and adopting orphaned acrobat Dick Grayson, who become his partner and best friend Robin। आइए इस मूवी का अन्य पॉइंट देखते हैं। जिसमें डायरेक्टर जॉल शुमाकर, स्क्रीन प्ले बाय ली बैचलर, जेनेट स्कॉट बैचलर, अकाइव गोल्ड्समैन, स्टोरी बाय ली बैचलर, जेनेट स्कॉट बैचलर, based on character appearing in magazine published by DC Comics. Batman character by Bob Kane, produced by Tim Burton, Peter McGregor. Scott. Cinematography Stephen Goldblatt, edited by Dennis Virkler, music by Reed Goldthal. Distributed Warner Bros. Date June 9, 1995. Man Village Theatre June 16, 1995. United States. Running
Taiwan 22 minutes, country United States, language English, budget $100 million, pork chop $336.6 million। दोस्तों अब इस मूवी के रिव्यू को आज हिसाब करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बैटमैन फॉरएवर हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। बैटमैन फॉरएवर इज 1995 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द DC कॉमिक्स कैरेक्टर बैटमैन बाय बॉब केन एंड बिल फिंगर। इट इज़ द थर्ड इंस्टॉलमेंट ऑफ बैटमैन फिल्म सीरीज एक्टिंग एज ए standalone sequel to Batman Returns, directed by Joel Schumacher and produced by Tim Burton and Peter McGregor. Scott. It starred Val Kilmer and Bruce Wayne, Batman replacing Michael Keaton alongside Tommy L. Jones, Jim Carrey, Nicole Kidman and Chris O'Donnell. The film follows Batman as he attempts to prevent Two-Face's and the Riddler from uncovering his script and identity and extracting information from the minds of Gotham City residents, while at the same time navigated his feelings for psychologist Dr. Chase Madrian and adopting orphaned acrobat Dick Grayson, who become his partner and best friend Robin। आइए इस मूवी का अन्य पॉइंट देखते हैं। जिसमें डायरेक्टर जोल शुमाकर, स्क्रीन प्ले बाय ली बैचलर, जेनेट स्कॉट बैचलर, अकाई गोल्ड्समैन, स्टोरी बाय ली बैचलर, जेनेट स्कॉट बैचलर, बेस्ड ऑन कैरेक्टर अपीयरिंग इन मैगजीन published by DC Comics, Batman character by Bob Kane, produced by Tim Burton, Peter McGregor, Scott. Cinematography Stephen Goldblatt, edited by Dennis Virkler, music by Reed Goldthal, distributed by Warner Bros. Release date June 9, 1995, Man Village Theatre, June 16, 1995, United States, running Taiwan 22 minutes, country United States, language English, budget $100 million, pork chop $336.6 million। दोस्तों अब इस मूवी के रिव्यू को आज हिसाब करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बैटमैन फॉरएवर हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। बैटमैन फॉरएवर इज 1995 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द DC कॉमिक्स कैरेक्टर बैटमैन बाय बॉब केन एंड बिल Finger. It is the third installment of Batman film series acting as a standalone sequel to Batman Returns, directed by Joel Schumacher and produced by Tim Burton and Peter McGregor. Scott. It starred Val Kilmer and Bruce Wayne, Batman replacing Michael Keaton alongside Tommy L. Jones, Jim Carrey, Nicole Kidman and Chris O'Donnell. The film follows Batman as he attempts to prevent Two-Face's and the Riddler from uncovering his script and identity and extracting information from the minds of Gotham City residents, while at the same time navigated his feelings for psychologist Dr. Chase Madrian and adopting orphaned acrobat Dick Grayson, who become his partner and best friend Robin। आइए इस मूवी का अन्य पॉइंट देखते हैं। जिसमें डायरेक्टर जोल शुमाकर, स्क्रीन प्ले बाय ली बैचलर, जेनेट स्कॉट बैचलर, अकाई गोल्ड्समैन, स्टोरी बाय ली बैचलर, जेनेट स्कॉट बैचलर, based on character appearing in magazine published by DC Comics, Batman character by Bob Kane, produced by Tim Burton, Peter McGregor, Scott. Cinematography Stephen Goldblatt, edited by Dennis Virkler, music by Reed Goldthal, distributed by Warner Bros. Release date June 9, 1995, Man Village Theatre, June 16, 1995, United States, running Taiwan 22 minutes, country United States, language English, budget $100 million, pork chop
$336.6 मिलियन। तो दोस्तों हम इस मूवी के रिव्यू को आज यही समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बैटमैन फॉरएवर हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। बैटमैन फॉरएवर इज 1995 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द DC कॉमिक्स कैरेक्टर बैटमैन बाय बॉब केन एंड बिल फिंगर। It is the third installment of Batman film series, acting as a standalone sequel to Batman Returns, directed by Joel Schumacher and produced by Tim Burton and Peter McGregor. Scott. It starred Val Kilmer and Bruce Wayne, Batman replacing Michael Keaton alongside Tommy Lee Jones, Jim Carrey, Nicole Kidman, and Chris O'Donnell. The film follows Batman as he attempts to prevent Two-Face's and the Riddler from uncovering his secret and identity and extracting information from the minds of Gotham City residents, while at the same time navigating his feelings for psychologist Dr. Chase Madrian and adopting orphaned acrobat Dick Grayson, who become his partner and best friend Robin. इस मूवी का अन्य पॉइंट देखते हैं जिसमें डायरेक्टर जोल शुमाकर, स्क्रीन प्ले बाय ली बैचलर, जेनेट स्कॉट बैचलर, अकाइव गोल्ड्समैन, स्टोरी बाय ली बैचलर, जेनेट स्कॉट बैचलर, based on character appearing in Magazine, published by DC Comics. Batman character by Bob Kane, produced by Tim Burton, Peter McGregor. Scott. Cinematography Stephen Goldblatt, edited by Dennis Virkler, music by Reed Goldthal, distributed by Warner Bros. Release date June 9, 1995, Man Village Theatre, June 16, 1995, United States. Running time 122 minutes. Country United States. Language English. Budget $100 million. Box office $336.6 मिलियन। तो दोस्तों हम इस मूवी के रिव्यू को आज यही समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बैटमैन फॉरएवर हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। बैटमैन फॉरएवर इज 1995 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द DC कॉमिक्स कैरेक्टर बैटमैन बाय बॉब केन एंड बिल फिंगर। It is the third installment of Batman film series, acting as a standalone sequel to Batman Returns, directed by Joel Schumacher and produced by Tim Burton and Peter McGregor. Scott. It starred Val Kilmer and Bruce Wayne, Batman replacing Michael Keaton alongside Tommy Lee Jones, Jim Carrey, Nicole Kidman, and Chris O'Donnell. The film follows Batman as he attempts to prevent Two-Face's and the Riddler from uncovering his secret and identity and extracting information from the minds of Gotham City residents, while at the same time navigating his feelings for psychologist Dr. Chase Madrian and adopting orphaned acrobat Dick Grayson, who become his partner and best friend Robin. इस मूवी का अन्य पॉइंट देखते हैं जिसमें डायरेक्टर जोल शुमाकर, स्क्रीन प्ले बाय ली बैचलर, जेनेट स्कॉट बैचलर, अकाइव गोल्ड्समैन, स्टोरी बाय ली बैचलर, जेनेट स्कॉट बैचलर, based on character appearing in Magazine, published by DC Comics. Batman character by Bob Kane, produced by Tim Burton, Peter McGregor. Scott. Cinematography Stephen Goldblatt, edited by Dennis Virkler, music by Reed Goldthal, distributed by Warner Bros. Release date June 9, 1995, Man Village Theatre, June 16, 1995, United States. Running time 122 minutes. Country United States. Language English. Budget $100 million. Box office
$336.6 million। दोस्तों हम इस मूवी के रिव्यू को आज यही समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बैटमैन फॉरएवर हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। बैटमैन फॉरएवर इज 1995 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द DC कॉमिक्स कैरेक्टर बैटमैन बाय बॉब केन एंड बिल फिंगर। It is the third installment of Batman film series, acting as a standalone sequel to Batman Returns, directed by Joel Schumacher and produced by Tim Burton and Peter McGregor. Scott. It starred Val Kilmer and Bruce Wayne, Batman replacing Michael Keaton alongside Tommy Lee Jones, Jim Carrey, Nicole Kidman, and Chris O'Donnell. The film follows Batman as he attempts to prevent Two-Face's and the Riddler from uncovering his secret and identity and extracting information from the minds of Gotham City residents, while at the same time navigating his feelings for psychologist Dr. Chase Madrian and adopting orphaned acrobat Dick Grayson, who become his partner and best friend Robin। आइए इस मूवी का अन्य पॉइंट देखते हैं। जिसमें डायरेक्टर जोल शुमाकर, स्क्रीन प्ले बाय ली बैचलर, जेनेट स्कॉट बैचलर, अकाइव गोल्ड्समैन, स्टोरी बाय ली बैचलर, जेनेट स्कॉट बैचलर, based on character appearing in magazine published by DC Comics. Batman character by Bob Kane, produced by Tim Burton, Peter McGregor. Scott. Cinematography Stephen Goldblatt, edited by Dennis Virkler, music by Reed Goldthal, distributed by Warner Bros. Release date June 9, 1995, Man Village Theatre, June 16, 1995, United States, running time 122 minutes, country United States, language English, budget $100 million, box office $336.6 million। दोस्तों हम इस मूवी के रिव्यू को आज यही समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बैटमैन फॉरएवर हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। बैटमैन फॉरएवर इज 1995 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द DC कॉमिक्स कैरेक्टर बैटमैन बाय बॉब केन एंड बिल फिंगर। It is the third installment of Batman film series, acting as a standalone sequel to Batman Returns, directed by Joel Schumacher and produced by Tim Burton and Peter McGregor. Scott. It starred Val Kilmer and Bruce Wayne, Batman replacing Michael Keaton alongside Tommy Lee Jones, Jim Carrey, Nicole Kidman, and Chris O'Donnell. The film follows Batman as he attempts to prevent Two-Face's and the Riddler from uncovering his secret and identity and extracting information from the minds of Gotham City residents, while at the same time navigating his feelings for psychologist Dr. Chase Madrian and adopting orphaned acrobat Dick Grayson, who become his partner and best friend Robin। आइए इस मूवी का अन्य पॉइंट देखते हैं। जिसमें डायरेक्टर जोल शुमाकर, स्क्रीन प्ले बाय ली बैचलर, जेनेट स्कॉट बैचलर, अकाइव गोल्ड्समैन, स्टोरी बाय ली बैचलर, जेनेट स्कॉट बैचलर, based on character appearing in magazine published by DC Comics. Batman character by Bob Kane, produced by Tim Burton, Peter McGregor. Scott. Cinematography Stephen Goldblatt, edited by Dennis Virkler, music by Reed Goldthal, distributed by Warner Bros. Release date June 9, 1995, Man Village Theatre, June 16, 1995, United States, running time 122 minutes, country United States, language English, budget $100 million, box office
$336.6 million। तो दोस्तों हम इस मूवी के रिव्यू को आज यही समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बैटमैन फॉरएवर हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। बैटमैन फॉरएवर इज ए 1995 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द DC कॉमिक्स कैरेक्टर बैटमैन बाय बॉब केन एंड बिल फिंगर। इट इज़ द थर्ड इंस्टॉलमेंट ऑफ बैटमैन फिल्म सीरीज एक्टिंग एज ए standalone sequel to Batman Returns, directed by Joel Schumacher and produced by Tim Burton and Peter McGregor. Scott. It starred Val Kilmer and Bruce Wayne, Batman replacing Michael Keaton alongside Tommy Lee Jones, Jim Carrey, Nicole Kidman and Chris O'Donnell. The film follows Batman as he attempts to prevent Two-Face's and the Riddler from uncovering his script and identity and extracting information from the minds of Gotham City residents, while at the same time navigated his feelings for psychologist Dr. Chase Madrian and adopting orphaned acrobat Dick Grayson, who become his partner and best friend Robin। आइए मूवी का अन्य पॉइंट देखते हैं। जिसमें डायरेक्टर जोल शुमाकर, स्क्रीन प्ले बाय ली बैचलर, जेनेट स्कॉट बैचलर, अकाइव गोल्ड्समैन, स्टोरी बाय ली बैचलर, जेनेट स्कॉट बैचलर, बेस्ड ऑन कैरेक्टर अपीयरिंग इन मैगजीन published by DC Comics। Batman character by Bob Kane, produced by Tim Burton, Peter McGregor, Scott. Cinematography Stephen Goldblatt, edited by Dennis Virkler, music by Reed Goldthal, distributed by Warner Bros. Release date June 9, 1995, Man Village Theatre, June 16, 1995, United States, running time 122 minutes, country United States, language English, budget $100 million, box office $336.6 million। तो दोस्तों हम इस मूवी के रिव्यू को आज यही समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बैटमैन फॉरएवर हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। बैटमैन फॉरएवर इज ए 1995 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द DC कॉमिक्स कैरेक्टर बैटमैन बाय बॉब केन एंड बिल Finger. It is the third installment of Batman film series acting as a standalone sequel to Batman Returns, directed by Joel Schumacher and produced by Tim Burton and Peter McGregor. Scott. It starred Val Kilmer and Bruce Wayne, Batman replacing Michael Keaton alongside Tommy Lee Jones, Jim Carrey, Nicole Kidman and Chris O'Donnell. The film follows Batman as he attempts to prevent Two-Face's and the Riddler from uncovering his script and identity and extracting information from the minds of Gotham City residents, while at the same time navigated his feelings for psychologist Dr. Chase Madrian and adopting orphaned acrobat Dick Grayson, who become his partner and best friend Robin। आइए मूवी का अन्य पॉइंट देखते हैं। जिसमें डायरेक्टर जोल शुमाकर, स्क्रीन प्ले बाय ली बैचलर, जेनेट स्कॉट बैचलर, अकाइव गोल्ड्समैन, स्टोरी बाय ली बैचलर, जेनेट स्कॉट बैचलर, based on character appearing in magazine published by DC Comics। Batman character by Bob Kane, produced by Tim Burton, Peter McGregor, Scott. Cinematography Stephen Goldblatt, edited by Dennis Virkler, music by Reed Goldthal, distributed by Warner Bros. Release date June 9, 1995, Man Village Theatre, June 16, 1995, United States, running time 122 minutes, country United States, language English, budget $100 million, box office
$336.6 million। तो दोस्तों हम इस मूवी के रिव्यू को आज यही समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बैटमैन फॉरएवर हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। बैटमैन फॉरएवर इज ए 1995 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द DC कॉमिक्स कैरेक्टर बैटमैन बाय बॉब केन एंड बिल फिंगर। इट इज़ द थर्ड इंस्टॉलमेंट ऑफ बैटमैन फिल्म सीरीज, एक्टिंग एज ए standalone sequel to Batman Returns, directed by Joel Schumacher and produced by Tim Burton and Peter McGregor. Scott. It starred Val Kilmer and Bruce Wayne, Batman replacing Michael Keaton alongside Tommy Lee Jones, Jim Carrey, Nicole Kidman and Chris O'Donnell. The film follows Batman as he attempts to prevent Two-Face's and the Riddler from uncovering his script and identity and extracting information from the minds of Gotham City residents, while at the same time navigated his feelings for psychologist Dr. Chase Madrian and adopting orphaned acrobat Dick Grayson, who become his partner and best friend Robin। आइए मूवी का अन्य पॉइंट देखते हैं। जिसमें डायरेक्टर जोल शुमाकर, स्क्रीन प्ले बाय ली बैचलर, जेनेट स्कॉट बैचलर, अकाई गोल्ड्समैन, स्टोरी बाय ली बैचलर, जेनेट स्कॉट बैचलर, बेस्ड ऑन कैरेक्टर अपीयरिंग इन मैगजीन published by DC Comics, Batman character by Bob Kane, produced by Tim Burton, Peter McGregor. Scott. Cinematography Stephen Goldblatt. Edited by Dennis Virkler. Music by Reed Goldthal. Distributed by Warner Bros. Release date June 9, 1995. Man Village Theatre, June 16, 1995. United States. Running time 122 minutes. Country United States. Language English. Budget $100 million. Box office $336.6 million। तो दोस्तों हम इस मूवी के रिव्यू को आज यही समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बैटमैन फॉरएवर हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। बैटमैन फॉरएवर इज ए 1995 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द DC कॉमिक्स कैरेक्टर बैटमैन बाय बॉब केन एंड बिल Finger. It is the third installment of Batman film series, acting as a standalone sequel to Batman Returns, directed by Joel Schumacher and produced by Tim Burton and Peter McGregor. Scott. It starred Val Kilmer and Bruce Wayne, Batman replacing Michael Keaton alongside Tommy Lee Jones, Jim Carrey, Nicole Kidman and Chris O'Donnell. The film follows Batman as he attempts to prevent Two-Face's and the Riddler from uncovering his script and identity and extracting information from the minds of Gotham City residents, while at the same time navigated his feelings for psychologist Dr. Chase Madrian and adopting orphaned acrobat Dick Grayson, who become his partner and best friend Robin। आइए मूवी का अन्य पॉइंट देखते हैं। जिसमें डायरेक्टर जोल शुमाकर, स्क्रीन प्ले बाय ली बैचलर, जेनेट स्कॉट बैचलर, अकाई गोल्ड्समैन, स्टोरी बाय ली बैचलर, जेनेट स्कॉट बैचलर, based on character appearing in magazine published by DC Comics, Batman character by Bob Kane, produced by Tim Burton, Peter McGregor. Scott. Cinematography Stephen Goldblatt. Edited by Dennis Virkler. Music by Reed Goldthal. Distributed by Warner Bros. Release date June 9, 1995. Man Village Theatre, June 16, 1995. United States. Running time 122 minutes. Country United States. Language English. Budget $100 million. Box office
$336.6 million। तो दोस्तों हम इस मूवी के रिव्यू को आज यही समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बैटमैन फॉरएवर हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। बैटमैन फॉरएवर इज ए 1995 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द DC कॉमिक्स कैरेक्टर बैटमैन बाय बॉब केन एंड बिल फिंगर। इट इज़ द थर्ड इंस्टॉलमेंट ऑफ बैटमैन फिल्म सीरीज एक्टिंग एज ए standalone sequel to Batman Returns, directed by Joel Schumacher and produced by Tim Burton and Peter McGregor. Scott. It starred Val Kilmer and Bruce Wayne Batman, replacing Michael Keaton alongside Tommy Lee Jones, Jim Carrey, Nicole Kidman, and Chris O'Donnell. The film follows Batman as he attempts to prevent Two-Face's and the Riddler from uncovering his secret and identity and extracting information from the minds of Gotham City residents, while at the same time navigating his feelings for psychologist Dr. Chase Madrian and adopting orphaned acrobat Dick Grayson, who become his partner and best friend Robin। इस मूवी का अन्य पॉइंट देखते हैं। इस मूवी डायरेक्टर जोल शुमाकर, स्क्रीन प्ले बाय ली बैचलर, जेनेट स्कॉट बैचलर, अकाइव गोल्ड्समैन, स्टोरी बाय ली बैचलर, जेनेट स्कॉट बैचलर, बेस्ड ऑन कैरेक्टर अपीयरिंग इन मैगजीन published by DC Comics। Batman character by Bob Kane, produced by Tim Burton, Peter McGregor. Scott. Cinematography Stephen Goldblatt, edited by Dennis Virkler, music by Reed Goldthal, distributed by Warner Bros. Release date June 9, 1995, Man Village Theatre, June 16, 1995, United States, running time 122 minutes, country United States, language English, budget $100 million, box office $336.6 million। तो दोस्तों हम इस मूवी के रिव्यू को आज यही समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बैटमैन फॉरएवर हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। बैटमैन फॉरएवर इज ए 1995 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द DC कॉमिक्स कैरेक्टर बैटमैन बाय बॉब केन एंड बिल Finger. It is the third installment of Batman film series acting as a standalone sequel to Batman Returns, directed by Joel Schumacher and produced by Tim Burton and Peter McGregor. Scott. It starred Val Kilmer and Bruce Wayne Batman, replacing Michael Keaton alongside Tommy Lee Jones, Jim Carrey, Nicole Kidman, and Chris O'Donnell. The film follows Batman as he attempts to prevent Two-Face's and the Riddler from uncovering his secret and identity and extracting information from the minds of Gotham City residents, while at the same time navigating his feelings for psychologist Dr. Chase Madrian and adopting orphaned acrobat Dick Grayson, who become his partner and best friend Robin। इस मूवी का अन्य पॉइंट देखते हैं। इस मूवी डायरेक्टर जोल शुमाकर, स्क्रीन प्ले बाय ली बैचलर, जेनेट स्कॉट बैचलर, अकाइव गोल्ड्समैन, स्टोरी बाय ली बैचलर, जेनेट स्कॉट बैचलर, based on character appearing in magazine published by DC Comics। Batman character by Bob Kane, produced by Tim Burton, Peter McGregor. Scott. Cinematography Stephen Goldblatt, edited by Dennis Virkler, music by Reed Goldthal, distributed by Warner Bros. Release date June 9, 1995, Man Village Theatre, June 16, 1995, United States, running time 122 minutes, country United States, language English, budget $100 million, box office
$336.6 मिलियन। तो दोस्तों हम इस मूवी के रिव्यू को आज यही समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बैटमैन फॉरएवर हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। बैटमैन फॉरएवर इज 1995 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द DC कॉमिक्स कैरेक्टर बैटमैन बाय बॉब केन एंड बिल फिंगर। इट इज़ द थर्ड इंस्टॉलमेंट ऑफ बैटमैन फिल्म सीरीज एक्टिंग एज ए standalone sequel to Batman Returns, directed by Joel Schumacher and produced by Tim Burton and Peter McGregor. Scott. It starred Val Kilmer and Bruce Wayne Batman, replacing Michael Keaton alongside Tommy Lee Jones, Jim Carrey, Nicole Kidman, and Chris O'Donnell. The film follows Batman as he attempts to prevent Two-Face's and the Riddler from uncovering his secret and identity and extracting information from the minds of Gotham City residents, while at the same time navigating his feelings for psychologist Dr. Chase Madrian and adopting orphaned acrobat Dick Grayson, who become his partner and best friend Robin. इस मूवी का अन्य पॉइंट देखते हैं। इस मूवी डायरेक्टर जोल शुमाकर, स्क्रीन प्ले बाय ली बैचलर, जेनेट स्कॉट बैचलर, अकाइव गोल्ड्समैन, स्टोरी बाय ली बैचलर, जेनेट स्कॉट बैचलर, बेस्ड ऑन कैरेक्टर अपीयरिंग इन मैगजीन published by DC Comics. Batman character by Bob Kane, produced by Tim Burton, Peter McGregor. Scott. Cinematography Stephen Goldblatt. Edited by Dennis Virkler. Music by Reed Goldthal. Distributed by Warner Bros. Release date June 9, 1995. Man Village Theatre, June 16, 1995. United States. Running time 122 minutes. Country United States. Language English. Budget $100 million. Box office $336.6 मिलियन। तो दोस्तों हम इस मूवी के रिव्यू को आज यही समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बैटमैन फॉरएवर हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। बैटमैन फॉरएवर इज 1995 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द DC कॉमिक्स कैरेक्टर बैटमैन बाय बॉब केन एंड बिल Finger. It is the third installment of Batman film series acting as a standalone sequel to Batman Returns, directed by Joel Schumacher and produced by Tim Burton and Peter McGregor. Scott. It starred Val Kilmer and Bruce Wayne Batman, replacing Michael Keaton alongside Tommy Lee Jones, Jim Carrey, Nicole Kidman, and Chris O'Donnell. The film follows Batman as he attempts to prevent Two-Face's and the Riddler from uncovering his secret and identity and extracting information from the minds of Gotham City residents, while at the same time navigating his feelings for psychologist Dr. Chase Madrian and adopting orphaned acrobat Dick Grayson, who become his partner and best friend Robin. इस मूवी का अन्य पॉइंट देखते हैं। इस मूवी डायरेक्टर जोल शुमाकर, स्क्रीन प्ले बाय ली बैचलर, जेनेट स्कॉट बैचलर, अकाइव गोल्ड्समैन, स्टोरी बाय ली बैचलर, जेनेट स्कॉट बैचलर, based on character appearing in magazine published by DC Comics. Batman character by Bob Kane, produced by Tim Burton, Peter McGregor. Scott. Cinematography Stephen Goldblatt. Edited by Dennis Virkler. Music by Reed Goldthal. Distributed by Warner Bros. Release date June 9, 1995. Man Village Theatre, June 16, 1995. United States. Running time 122 minutes. Country United States. Language English. Budget $100 million. Box office
$336.6 मिलियन। तो दोस्तों हम इस मूवी की रिव्यू को आज यही समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बैटमैन फॉरएवर हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। बैटमैन फॉरएवर इज 1995 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द DC कॉमिक्स कैरेक्टर बैटमैन बाय बॉब केन एंड बिल फिंगर। It is the third installment of Batman film series, acting as a standalone sequel to Batman Returns, directed by Joel Schumacher and produced by Tim Burton and Peter McGregor. Scott. It starred Val Kilmer and Bruce Wayne Batman, replacing Michael Keaton alongside Tommy Lee Jones, Jim Carrey, Nicole Kidman, and Chris O'Donnell. The film follows Batman as he attempts to prevent Two-Face and the Riddler from uncovering his secret and identity and extracting information from the minds of Gotham City residents, while at the same time navigating his feelings for psychologist Dr. Chase Madrian and adopting orphaned acrobat Dick Grayson, who become his partner and best friend Robin. इस मूवी का अन्य पॉइंट देखते हैं। इस मूवी डायरेक्टर जोल शुमाकर, स्क्रीन प्ले बाय ली बैचलर, जेनेट स्कॉट बैचलर, अकाइव गोल्ड्समैन, स्टोरी बाय ली बैचलर, जेनेट स्कॉट बैचलर, based on character appearing in Magazine, published by DC Comics. Batman character by Bob Kane, produced by Tim Burton, Peter McGregor. Scott. Cinematography Stephen Goldblatt, edited by Dennis Virkler, music by Reed Goldthal, distributed by Warner Bros. Release date June 9, 1995, Man Village Theatre, June 16, 1995, United States, running time 122 minutes, country United States, language English, budget $100 million, box office $336.6 मिलियन। तो दोस्तों हम इस मूवी की रिव्यू को आज यही समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बैटमैन फॉरएवर हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। बैटमैन फॉरएवर इज 1995 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द DC कॉमिक्स कैरेक्टर बैटमैन बाय बॉब केन एंड बिल फिंगर। It is the third installment of Batman film series, acting as a standalone sequel to Batman Returns, directed by Joel Schumacher and produced by Tim Burton and Peter McGregor. Scott. It starred Val Kilmer and Bruce Wayne Batman, replacing Michael Keaton alongside Tommy Lee Jones, Jim Carrey, Nicole Kidman, and Chris O'Donnell. The film follows Batman as he attempts to prevent Two-Face and the Riddler from uncovering his secret and identity and extracting information from the minds of Gotham City residents, while at the same time navigating his feelings for psychologist Dr. Chase Madrian and adopting orphaned acrobat Dick Grayson, who become his partner and best friend Robin. इस मूवी का अन्य पॉइंट देखते हैं। इस मूवी डायरेक्टर जोल शुमाकर, स्क्रीन प्ले बाय ली बैचलर, जेनेट स्कॉट बैचलर, अकाइव गोल्ड्समैन, स्टोरी बाय ली बैचलर, जेनेट स्कॉट बैचलर, based on character appearing in Magazine, published by DC Comics. Batman character by Bob Kane, produced by Tim Burton, Peter McGregor. Scott. Cinematography Stephen Goldblatt, edited by Dennis Virkler, music by Reed Goldthal, distributed by Warner Bros. Release date June 9, 1995, Man Village Theatre, June 16, 1995, United States, running time 122 minutes, country United States, language English, budget $100 million, box office
$336.6 million। तो दोस्तों अब इस मूवी की रिव्यू को आज यही समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बैटमैन फॉरएवर हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। बैटमैन फॉरएवर इज 1995 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द डीसी कॉमिक्स कैरेक्टर बैटमैन बाय बॉब केन एंड बिल फिंगर। इट इज़ द थर्ड इंस्टॉलमेंट ऑफ बैटमैन फिल्म सीरीज एक्टिंग एज ए standalone sequel to Batman Returns, directed by Joel Schumacher and produced by Tim Burton and Peter McGregor. Scott. It starred Val Kilmer and Bruce Wayne Batman, replacing Michael Keaton alongside Tommy Lee Jones, Jim Carrey, Nicole Kidman, and Chris O'Donnell. The film follows Batman as he attempts to prevent Two-Face's and the Riddler from uncovering his secret and identity and extracting information from the minds of Gotham City residents, while at the same time navigating his feelings for psychologist Dr. Chase Madrian and adopting orphaned acrobat Dick Grayson, who become his partner and best friend Robin। इस मूवी का अन्य पॉइंट देखते हैं। इस मूवी डायरेक्टर जोल शुमाकर, स्क्रीन प्ले बाय ली बैचलर, जेनेट स्कॉट बैचलर, अकाइव गोल्ड्समैन, स्टोरी बाय ली बैचलर, जेनेट स्कॉट बैचलर, बेस्ड ऑन कैरेक्टर अपीयरिंग इन मैगजीन published by DC Comics Batman character by Bob Kane, produced by Tim Burton, Peter McGregor. Scott. Cinematography Stephen Goldblatt, edited by Dennis Virkler, music by Reed Goldthal, distributed by Warner Bros. Release date June 9, 1995, Man Village Theatre, June 16, 1995, United States, running time 122 minutes, country United States, language English, budget $100 million, box office $336.6 million। तो दोस्तों अब इस मूवी की रिव्यू को आज यही समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बैटमैन फॉरएवर हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। बैटमैन फॉरएवर इज 1995 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द डीसी कॉमिक्स कैरेक्टर बैटमैन बाय बॉब केन एंड बिल फिंगर। It is the third installment of Batman film series acting as a standalone sequel to Batman Returns, directed by Joel Schumacher and produced by Tim Burton and Peter McGregor. Scott. It starred Val Kilmer and Bruce Wayne Batman, replacing Michael Keaton alongside Tommy Lee Jones, Jim Carrey, Nicole Kidman, and Chris O'Donnell. The film follows Batman as he attempts to prevent Two-Face's and the Riddler from uncovering his secret and identity and extracting information from the minds of Gotham City residents, while at the same time navigating his feelings for psychologist Dr. Chase Madrian and adopting orphaned acrobat Dick Grayson, who become his partner and best friend Robin। इस मूवी का अन्य पॉइंट देखते हैं। इस मूवी डायरेक्टर जोल शुमाकर, स्क्रीन प्ले बाय ली बैचलर, जेनेट स्कॉट बैचलर, अकाइव गोल्ड्समैन, स्टोरी बाय ली बैचलर, जेनेट स्कॉट बैचलर, based on character appearing in magazine published by DC Comics Batman character by Bob Kane, produced by Tim Burton, Peter McGregor. Scott. Cinematography Stephen Goldblatt, edited by Dennis Virkler, music by Reed Goldthal, distributed by Warner Bros. Release date June 9, 1995, Man Village Theatre, June 16, 1995, United States, running time 122 minutes, country United States, language English, budget $100 million, box office
$336.6 million। तो दोस्तों अब इस मूवी के रिव्यू को आज यही समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बैटमैन फॉरएवर हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। बैटमैन फॉरएवर इज ए 1995 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द DC कॉमिक्स कैरेक्टर बैटमैन बाय बॉब केन एंड बिल फिंगर। इट इज़ द थर्ड इंस्टॉलमेंट ऑफ बैटमैन फिल्म सीरीज एक्टिंग एज ए standalone sequel to Batman Returns, directed by Joel Schumacher and produced by Tim Burton and Peter McGregor. Scott. It starred Val Kilmer and Bruce Wayne, Batman replacing Michael Keaton alongside Tommy Lee Jones, Jim Carrey, Nicole Kidman and Chris O'Donnell. The film follows Batman as he attempts to prevent Two-Face's and the Riddler from uncovering his secret and identity and extracting information from the minds of Gotham City residents, while at the same time navigated his feelings for psychologist Dr. Chase Madrian and adopting orphaned acrobat Dick Grayson, who become his partner and best friend Robin। इस मूवी का अन्य पॉइंट देखते हैं। जिस मूवी डायरेक्टर जोल शुमाकर, स्क्रीन प्ले बाय ली बैचलर, जेनेट स्कॉट बैचलर, अकाइव गोल्ड्समैन, स्टोरी बाय ली बैचलर, जेनेट स्कॉट बैचलर, बेस्ड ऑन कैरेक्टर अपीयरिंग इन मैगजीन published by DC Comics Batman character by Bob Kane, produced by Tim Burton, Peter McGregor. Scott. Cinematography Stephen Goldblatt, edited by Dennis Virkler, music by Reed Goldthal, distributed by Warner Bros. Release date June 9, 1995, Man Village Theatre, June 16, 1995, United States, running time 122 minutes, country United States, language English, budget $100 million, box office $336.6 million। तो दोस्तों अब इस मूवी के रिव्यू को आज यही समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बैटमैन फॉरएवर हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। बैटमैन फॉरएवर इज ए 1995 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द DC कॉमिक्स कैरेक्टर बैटमैन बाय बॉब केन एंड बिल फिंगर। It is the third installment of Batman film series acting as a standalone sequel to Batman Returns, directed by Joel Schumacher and produced by Tim Burton and Peter McGregor. Scott. It starred Val Kilmer and Bruce Wayne, Batman replacing Michael Keaton alongside Tommy Lee Jones, Jim Carrey, Nicole Kidman and Chris O'Donnell. The film follows Batman as he attempts to prevent Two-Face's and the Riddler from uncovering his secret and identity and extracting information from the minds of Gotham City residents, while at the same time navigated his feelings for psychologist Dr. Chase Madrian and adopting orphaned acrobat Dick Grayson, who become his partner and best friend Robin। इस मूवी का अन्य पॉइंट देखते हैं। जिस मूवी डायरेक्टर जोल शुमाकर, स्क्रीन प्ले बाय ली बैचलर, जेनेट स्कॉट बैचलर, अकाइव गोल्ड्समैन, स्टोरी बाय ली बैचलर, जेनेट स्कॉट बैचलर, based on character appearing in magazine published by DC Comics Batman character by Bob Kane, produced by Tim Burton, Peter McGregor. Scott. Cinematography Stephen Goldblatt, edited by Dennis Virkler, music by Reed Goldthal, distributed by Warner Bros. Release date June 9, 1995, Man Village Theatre, June 16, 1995, United States, running time 122 minutes, country United States, language English, budget $100 million, box office
$336.6 मिलियन। दोस्तों हम इस मूवी की रिव्यू को आज यही समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बैटमैन फॉरएवर हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। बैटमैन फॉरएवर इज ए 1995 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द DC कॉमिक्स कैरेक्टर बैटमैन बाय बॉब केन एंड बिल फिंगर। It is the third installment of Batman film series, acting as a standalone sequel to Batman Returns, directed by Joel Schumacher and produced by Tim Burton and Peter McGregor. It starred Val Kilmer and Bruce Wayne, Batman replacing Michael Keaton alongside Tommy Lee Jones, Jim Carrey, Nicole Kidman and Chris O'Donnell. The film follows Batman as he attempts to prevent Two-Face's and the Riddler from uncovering his secret and identity and extracting information from the minds of Gotham City residents, while at the same time navigating his feelings for psychologist Dr. Chase Madrian and adopting orphaned acrobat Dick Grayson, who become his partner and best friend Robin. आइए इस मूवी का अन्य पॉइंट देखते हैं। जिस मूवी डायरेक्टर जोल सुमाकर, स्क्रीन प्ले वाले ली बैचलर, जेनेट स्कॉट बैचलर, अकाइव गोल्ड्समैन, स्टोरी बाय ली बैचलर, जेनेट स्कॉट बैचलर, based on character appearing in magazine published by DC Comics. Batman character by Bob Kane, produced by Tim Burton, Peter McGregor. Cinematography Stephen Goldblatt, edited by Dennis Virkler, music by Reed Goldthal, distributed by Warner Bros. Release date June 9, 1995. Man Village Theatre, June 16, 1995. United States. Running time 122 minutes. Country United States. Language English. Budget $100 million. Box office $336.6 मिलियन। दोस्तों हम इस मूवी की रिव्यू को आज यही समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बैटमैन फॉरएवर हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। बैटमैन फॉरएवर इज ए 1995 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द DC कॉमिक्स कैरेक्टर बैटमैन बाय बॉब केन एंड बिल फिंगर। It is the third installment of Batman film series, acting as a standalone sequel to Batman Returns, directed by Joel Schumacher and produced by Tim Burton and Peter McGregor. It starred Val Kilmer and Bruce Wayne, Batman replacing Michael Keaton alongside Tommy Lee Jones, Jim Carrey, Nicole Kidman and Chris O'Donnell. The film follows Batman as he attempts to prevent Two-Face's and the Riddler from uncovering his secret and identity and extracting information from the minds of Gotham City residents, while at the same time navigating his feelings for psychologist Dr. Chase Madrian and adopting orphaned acrobat Dick Grayson, who become his partner and best friend Robin. आइए इस मूवी का अन्य पॉइंट देखते हैं। जिस मूवी डायरेक्टर जोल सुमाकर, स्क्रीन प्ले वाले ली बैचलर, जेनेट स्कॉट बैचलर, अकाइव गोल्ड्समैन, स्टोरी बाय ली बैचलर, जेनेट स्कॉट बैचलर, based on character appearing in magazine published by DC Comics. Batman character by Bob Kane, produced by Tim Burton, Peter McGregor. Cinematography Stephen Goldblatt, edited by Dennis Virkler, music by Reed Goldthal, distributed by Warner Bros. Release date June 9, 1995. Man Village Theatre, June 16, 1995. United States. Running time 122 minutes. Country United States. Language English. Budget $100 million. Box office
$336.6 मिलियन। दोस्तों हम इस मूवी के रिव्यू को आज यही समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बैटमैन फॉरएवर हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। बैटमैन फॉरएवर इज 1995 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द DC कॉमिक्स कैरेक्टर बैटमैन बाय बॉब केन एंड बिल फिंगर। It is the third installment of Batman film series, acting as a standalone sequel to Batman Returns, directed by Joel Schumacher and produced by Tim Burton and Peter McGregor. Scott. It starred Val Kilmer and Bruce Wayne, Batman replacing Michael Keaton alongside Tommy Lee Jones, Jim Carrey, Nicole Kidman, and Chris O'Donnell. The film follows Batman as he attempts to prevent Two-Face and the Riddler from uncovering his secret and identity and extracting information from the minds of Gotham City residents, while at the same time navigating his feelings for psychologist Dr. Chase Madrian and adopting orphaned acrobat Dick Grayson, who become his partner and best friend Robin। आइए इस मूवी का अन्य पॉइंट देखते हैं। जिसमें डायरेक्टर जोल शुमाकर, स्क्रीन प्ले बाय ली बैचलर, जेनेट स्कॉट बैचलर, अकाइव गोल्ड्समैन, स्टोरी बाय ली बैचलर, जेनेट स्कॉट बैचलर, based on character appearing in magazine published by DC Comics Batman character by Bob Kane, produced by Tim Burton, Peter McGregor. Scott. Cinematography Stephen Goldblatt, edited by Dennis Virkler, music by Reed Goldthal, distributed by Warner Bros. Release date June 9, 1995, Man Village Theatre, June 16, 1995, United States, running time 122 minutes, country United States, language English, budget $100 million, box office $336.6 मिलियन। दोस्तों हम इस मूवी के रिव्यू को आज यही समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।